Imagine an ancient temple complex, its structures whispering tales of a vibrant past, nestled amidst the verdant hills of Assam. This is the Madan Kamdev Temple Complex, a site of profound historical, cultural and religious significance. In the heart of Baihatta-Chariali, a mere 40 kilometers from Guwahati, the ruins of Madan Kamdev echo the resonant stories of the 10th to 12th century AD. The Palace of Kamarupa, ardent followers of Hindu Tantricism, constructed a constellation of temples across Assam. It was during their reign that the Kalika Purana, a cornerstone of Hindu tantric worship, took form. The tantric rituals of the era, involving a multitude of erotic practices, are reflected in the sculptures adorning the Madan Kamdev Temple complex. ইয়াত মদনে মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰি পুনৰ ৰূপ পাইছিল। পুনৰ ৰূপ পোৱা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মদনক যেতিয়া ভস্ম কৰিছিল তেতিয়া মদনৰ পত্নী ৰতীয়ে শিৱক আৰাধনা কৰে। শিৱক আৰাধনা কৰি শিৱই সন্তুষ্ট হৈ মদনক পুনৰ জীৱিত কৰে। যদিও মদন পুনৰ জীৱিত হয়, তেওঁ প্ৰকৃত ৰূপটো হেৰুৱাই পেলায়। তেতিয়া ৰতীয়ে পুনৰ শিৱক আৰাধনা কৰে আৰু তেতিয়া শিৱই ৰতীক পৰামৰ্শ দিয়ে যে পুনৰ ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মা কামাখ্যাহে পাৰিব, সেইটো মই নোৱাৰোঁ, যে মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰা। তেতিয়া ৰতীয়ে ইয়াত 14টা শিৱলিংগ স্থাপন কৰি মা কামাখ্যাক আৰাধনা কৰে আৰু মা কামাখ্যাই পুনৰ ৰতীৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ মদনক পুনৰ ৰূপ প্ৰদান কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰা এই ঠাইৰ নাম মদন কামদেৱ। The temple complex is named after Kamdev, or Madan, the Hindu god of love. According to folklore, Kamdev once drew the ire of Lord Shiva for disrupting his tapas, or spiritual meditation, and was turned to ashes. However, on the counsel of his wife Parvati, Shiva restored Kamdev to his original form. The site of this transformation became known as Kamrup in Assamese, and it's here that Kamdev reunited with his wife Rati. মদন কামদেৱৰ পৰাই পুৰণি কামৰূপ নামটো হোৱা বুলি একাংশ বিশেষজ্ঞই ক'ব খোজে। The ancient name of Assam, Kamrup, is derived from Kamdev, symbolizing the land where the god of love regained his original form. Kamdev built a temple to Lord Shiva on a hillock, and it is this temple that we now recognize as Madan Kamdev. Over time, the temples at Madan Kamdev were destroyed, an act believed to be the handiwork of Kalapahar. Today, the ruins are thought to be remnants of over 20 temples dedicated to Lord Shiva. The surviving portions of Madan Kamdev hint at the exquisite craftsmanship of the medieval temples in the Brahmaputra Valley. Amid the ruins, one can find fragments of enormous pillars adorned with floral and cosmic figures, a six-headed Bhairava, a four-headed Shiva, and statues of the sun, Ganesha and Vidyadhara, celestial beings revered for their wisdom. Exploration of the site continues intermittently, with new discoveries cropping up regularly. शिवजी ने ध्यान पे व्यस्त है, वो ध्यान भंग करने के लिए विष्णु ने मदन को भेजा, उसी का मानव पुत्र को उसी को भेजा है। वो नृत्य करके शिवजी को ये भंग किया है ध्यान। बाद में शिवजी उसी को ये देहांत ये किया, जब भस्म कर दिया है। वो जो तीन नंबर आई है आँख है, 3 नंबर आँख से उसी को ये भस्म करना है, भस्म कर दिया। बाद में भस्म करने के बाद वो रोटी देवी ने हल्ला किया है। रोटी देवी बोला हमारा पोती जी को देहांत हुआ, जे आपने हमको बचा दीजिए, उसी को पुनर्जीवन दीजिए। बाद में पुनर्जीवन दिया शिव जी ने। पुनर्जीवन देने के बाद उसी का प्रॉब्लम हुआ कि ओरिजिनल मदन नहीं है, वो रूपवान है, वो पूरा रूप है उसी का पास। इसीलिए बाद में बोला शिव जी को ध्यान पे जो ये किया ये रोटी देवी ने, तब बोला जे बोले तुम कामाख्या देवी को मांगो, वर मांगो। जे कामाख्या देवी ने ये देना है, उसी को रूप दान करता है। और बाद में ये शिव जी इसी को वो बोल के जो किया रोटी देवी ने, उसी को बोला है शिव जी ने यहाँ पे शुद्ध को अभी जहाँ बैठा हुआ यहाँ पे शुद्ध को शिव जी का मंदिर बना के शिवलिंग
बना के पूजा करने के लिए बोला, तब कामाख्या देवी आएगा, तो कामाख्या देवी रूप दान करेगा। Today, Madan Kamdev has evolved into a perennial pilgrimage site, drawing increasingly large crowds for religious festivals. One such festival is the Kam Triyodasi Tithi, an auspicious celebration held in the month of Chaitra. As per the Yogini Tantra, those who observe this celebration with utmost sincerity are absolved of all sins and attain Brahmapada or liberation. Thus, the Madan Kamdev temple complex weaves a rich tapestry of history, culture, and religion. It stands as a testament to the past and continues to be a beacon of spiritual significance, inviting all to partake in its timeless legacy.